Hello everyone, welcome to your own channel Education Can't Wait. In this channel, as we discussed earlier, that we are going to start a series which will be beneficial for us for the upcoming exams such as HPSC, UPSC, HSSC and many more such as railways and all. Now, we are starting the series with geography, that too from class 6 geography I am starting here, and in this video we are going to discuss about chapter number 1, that is completely a factual data. We are going to discuss about this. Okay, before that let us discuss about the term geography. Geography consists of two words, that is geo plus graphy. So what we are going to discuss in this geography subject, we are going to discuss about geo. Geo means earth and graphy means written. So what we know about earth till now, we are going to discuss about that thing in our subject. Okay, so let's begin with our first definition that is given in the chapter is full moon. What is full moon? Now it is given here in this chapter, full moon. What is full moon now? The full moon is the lunar phase when the moon appears fully illuminated from Earth's perspective. जब अर्थ के पर्सपेक्टिव से जो हमारा मून है वो पूरी तरह से इल्यूमिनेटेड होता है, ब्राइट होता है, अपनी कंप्लीट स्टेज में होता है. That particular stage of the moon is known as full moon, and on which night this moon appears, that particular night is known as full moon night. Okay, here this occurs when this night occurs, this occurs when earth is between sun and moon. For instance, this is sun, then this is moon, sun, moon, and between them if earth occurs, then this is the position where this full moon occurs, when earth is between sun and moon. On that particular night we'll see full moon in the sky. This means that the lunar hemisphere facing, जो lunar hemisphere है, जो moon का hemisphere है, hemisphere, what is hemisphere? Hemisphere consists of two words, hemi plus sphere. Hemi means half and sphere means the shape itself, the spherical shape itself. So hemisphere means आधा sphere. ओके, जब मून का आधा स्फीयर अर्थ की तरफ फेस करता है और बहुत पास होता है तो उस टाइम हमें कम्प्लीटली एक सर्कुलर डिस्क की तरह अपीयर होता है हमारा मून, एंड दैट नाइट इज नोन एज फुल मून नाइट. इन हिंदी वी कैन कॉल इट एज पूर्णिमा. In Hindi we can call it as Purnima. This is the figure of full moon. This is the figure of full moon. The appearance of moon in its complete stage or the appearance of moon in a circular disc is known as full moon. Moving further, we will discuss about new moon. What is new moon? New moon in astronomy, the new moon is the first lunar phase when the moon and sun have the same elliptical longitude. जब दोनों का, सन और मून दोनों का इलिप्टिकल ऑर्बिट सेम होता है, इन दैट स्टेट वी कैन से दैट देयर इज द कंडीशन अपीयर्स दैट विल गिव अस न्यू मून. What is new moon? New moon means the sky will be clear, there will be no moon in the sky, or in Hindi we can call it as Amavas. In Hindi we can call it as Amavas. At this phase the lunar disk is not visible to the unaided eye. जब तक हम अपनी आई से किसी और चीज, फॉर इंस्टेंस if we use telescope or some other kind of instrument, then only it will be appear to us, otherwise it will not be visible to us. Moving further, let us talk about celestial body. What is celestial body? As we all know that in sky there are several natural bodies, and all the natural bodies such as the sun, the moon and all the objects shining in the night sky are called celestial bodies. Okay, some celestial bodies are very big and very hot. Some celestial bodies are very big and very hot. They are made up of gases. जो सेलेस्टियल बॉडी होती हैं वो गैसेस से भी बनी हुई होती हैं. दे मे बी ऑफ वेरी बिग साइज, दे मे बी वेरी हॉट एज वेल,
they have their own heat and light which they emit in the large amount. जो उनकी हीट और लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में या अत्यधिक मात्रा में वो उनको रेडिएट करते हैं. These celestial bodies are called stars. Sun is also considered as a star. Here, so we can define celestial body as the bodies which appears in the sky, such as the sun, the moon. These are the celestial bodies. All the sun itself, the other 8 planets are also, and dwarf planets. Then moving further, asteroids. These are the part of celestial bodies itself. Constellation. One term is there in this chapter, that is constellation. If we talk about constellation, then the constellation is group of stars forming various patterns is called a constellation. जब बहुत सारे stars का group बनकर वो कुछ patterns बनाते हैं तो उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन. पैटर्न्स किस तरह के हो सकते हैं? इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ बिग बियर, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सप्तऋषि, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ उर्सा मेजर, उर्सा माइनर. देयर आर नियरली 88 कॉन्स्टिलेशंस. सी, जब हम स्काई में देख रहे होते हैं तो होता है कि कुछ क्लाउड्स जो होते हैं वो अपनी शेप बना रहे होते हैं. मीन्स देयर आर सेवरल शेप्स, सेवरल पैटर्न्स दैट क्लाउड्स आर हैविंग. जब हम उनको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो ये क्लाउड्स होते हैं ये फर्दर अपनी शेप चेंज करते रहते हैं. इन द सेम मैनर स्टार्स जो होते हैं वो भी एक तरह से शेप बना सकते हैं. जो उनका क्लस्टर होता है, जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, वो किसी तरह से पैटर्न्स बनाता है. डिफरेंट पैटर्न्स इट मे हैव. द ग्रुप ऑफ स्टार्स में फॉर्म इमेजिनरी लाइन पैटर्न्स. हमें उनको समझने के लिए क्या करना होता है? इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी होती है अपने माइंड में. फॉर इंस्टेंस यहाँ पर ये पोल स्टार है, एक स्टार यहाँ पर है, दूसरा यहाँ है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ. अगर हमें इसकी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है देन हाउ विल वी ज्वाइन इट? वी विल ज्वाइन इट लाइक दिस. ओके, तो जब हम इसको इस तरह से ज्वाइन करते हैं तो हम देखते हैं कुछ पैटर्न्स बने हैं. तो जो वो पैटर्न्स बनते हैं उन्हीं को हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं. इन सिंपल टर्म्स, इन लेमैन टर्म्स, वी कैन से दैट द ग्रुप ऑफ स्टार्स forming several patterns is known as constellation. Moving further, we'll talk about planets from this chapter. What are planets? Some celestial bodies do not have their own heat and light. They lit up by the light of stars. Such bodies are called planets. बहुत सारी ऐसी bodies होती हैं जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है या उनकी खुद की कोई हीट नहीं होती है. वो दूसरे किसी ऑब्जेक्ट से या दूसरे किसी सेलेस्टियल बॉडी से अपने आप को लाइट देते हैं और हीट देते हैं. इस तरह की जो हेवनली बॉडीज़ होती है उनको हम प्लैनेट बोलते हैं. In simple terms, we can say a planet is an astronomical body orbiting a star or stellar remnant rounding by its own gravity is not massive enough to cause thermonuclear fusion. हम कह सकते हैं जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्लैनेट सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिनकी खुद की कोई लाइट या हीट नहीं होती एंड दे लिट अप बाय द लाइट ऑफ अदर स्टार्स. Now, if we talk about the term planets, then the term planet come from the word planetai. जो planetai जिसका मतलब हमारा होता है wanderers, तो वहाँ से ये term निकल कर आई है. Now, moving further, if we talk about the solar system, existing solar system, that is, if we can see in this figure, then here this is sun, and these are the other 8 planets. These are the other 8 planets of the solar system. If we talk about the sun, then let us see what sun is. The sun is in the center of the solar system. जो sun है वो पूरे solar system के center में exist करता है. For instance, here is sun, और इसके चारों तरफ जो other planets हैं वो revolve करते हैं इसके चारों तरफ. Moving further, it is huge एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. जो हमारा सन है वो बहुत बड़ा है और हॉट गैसेस से मिलकर बनता है. इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम.
but that tremendous heat is not felt so much by us. Why? We can't feel that much heat and light from the sun. Why we are not getting tremendous heat of the sun? Because despite being our nearest star, it is far away from us. वो हमसे बहुत दूर है. We can say it's approximately 150 million kilometers away from the earth. Hence we are not getting its tremendous heat and light. If we talk about planets, then planets are there are 8 planets in our solar system. In order of their distance, हम उनको दिखाते हैं अपने डिस्टेंस के ऑर्डर पे. हम उनकी एक सीरीज़ बनाते हैं और जो इजी वे होता है मेमोराइज करने का, दैट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रिक. वी कैन से माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. जब हम ये पूरा का पूरा फ्रेज देखते हैं, माई वेरी एक्सप्रेसिव मदर, my, from my we will take first alphabet, that is M. My very expressive mother just served us nuts. By this trick we can identify the series of the planets, such as here we can say the series of planets is first of all Mercury, then Venus, then Earth, then Mars, then Jupiter, then Saturn, and then Uranus, and then Neptune. Here Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and then Pluto was also known as planet till 2006. But after a meeting of International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects such as UB313 discovered in recent past, may not be called as dwarf planet. Why? Because it was not fulfilling the certain conditions in which it will be classified as a planet. So it was out of the planets category. Moving further, if we talk about our earth itself, then planets. In this planet, if we talk about our earth, where we are living, then what is the shape of the earth? We will discuss here. What is the shape of the earth? The shape of the earth is geoid. Sometimes we say that the shape of the earth is spherical, but it is not spherical. It is not completely spherical. It is geoid shape. What is geoid shape now? Geoid shape is slightly flattened from the top and bottom, bulgy sideways. जो अर्थ है, अर्थ की शेप कुछ इस तरह है कि ऊपर और नीचे जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है वहाँ से वो स्लाइटली फ्लैटन्ड है, फ्लैटन्ड फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ एंड बल्जी साइडवेज, एंड दिस काइंड ऑफ शेप इज नॉन एज जियोइड शेप. The earth is the third nearest planet to the sun in size and fifth largest planet. This is flattened from the tops. As I discussed earlier, it is flattened from the top and bulgy sideways. So this shape is known as the geoid shape, and geoid means earth-like shape. And now moving further, if we talk about earth, then earth is also known as unique planet. Why? Because this is the only planet which have life. The air has life supporting gases such as oxygen. Because of this reason, earth is also known as unique planet. Earth is neither too hot nor too cold, means it has survival conditions for the living beings, hence it is known as the unique planet. Moving further, if we talk about our next definition here, that is asteroids, then we will discuss about asteroids in detail. This is the picture of asteroids. Asteroid is also part of our universe. Apart from stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids.
कुछ ऐसी बॉडी होती हैं जो स्टार्स और सन या सैटेलाइट या प्लैनेट्स के अलावा भी होती हैं, जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं या रोटेट करती हैं। ऐसी बॉडीज़ को हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। दे आर फॉर्म्ड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। फॉर इंस्टेंस, इफ आई टॉक अबाउट सोलर सिस्टम, this is sun for instance, then moving further Mercury, Venus, Earth, Mars, like that way. For instance, if I talk about this is Mars, for instance this is Mars and this is Jupiter, तो इसके बीच का जो स्पेस है यहाँ पर ये टाइनी बॉडीज़ लाए करती हैं, और जो ये पूरी की पूरी बेल्ट होती है जहाँ पर ये टाइनी बॉडीज़ लाए करती हैं, इसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट भी बोलते हैं। द कंप्लीट बेल्ट इज़ नोन एज द एस्टेरॉयड बेल्ट एज वेल। Moving further, they are found between the orbits of Mars and Jupiter. Scientists are of view that asteroids are parts of planet which exploded many years ago. See, in geography, when we talk about many years, some years or several years, that means thousands or millions of years in geography. Okay. So if we talk about asteroids, if we talk about the history of asteroids, then we can say that asteroids were once part of planets which are exploded, which are separated from their planet after the explosion. It is given here that asteroids are left over from the formation of our solar system. Our solar system began about 4.6 billion years ago, when a big cloud of gas and dust collapsed. When this happened, most of the material fell on the center of the cloud and formed the sun. ये वही चीज़ है asteroids. Now moving further, if we talk about meteoroids, then what are meteoroids? The small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids. Small pieces of rocks which move around the sun is called मेटेरॉइड्स। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ये मेटेरॉइड्स होते हैं ये अर्थ के आसपास भी आ जाते हैं, और जब ये अर्थ के आसपास आते हैं तो वहाँ पर ये एक दूसरे से कोलाइड कर सकते हैं, एंड ड्यू टू दैट फ्रिक्शन, जब वो कोलाइड करते हैं, ड्यू टू दैट फ्रिक्शन उनमें हीट रेडिएट होती है या वो हीटअप हो जाते हैं और फिर बर्न होते हैं, जिसकी वजह से अगर वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हुए तो वो अर्थ पर आकर गिरते हैं, और जिसकी वजह से फ्लैश ऑफ लाइट में अकर में इट मे कॉज फ्लैश ऑफ लाइट। समटाइम्स मेटेरॉइड विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होलो, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द मेटेरॉइड्स। मूविंग फर्दर, we'll discuss about galaxy. Now tell me, had you ever seen a whitish broad band like a white glowing path across the sky in a clear starry night? I hope you had seen. If not, then kindly observe. Now it is a cluster of millions of stars. This band is a Milky Way galaxy. We can say that there are million of stars, there are cluster of millions of stars, जिनकी वजह से हमें वो white appear होता है as it is given here in this figure। तो उस तरह से हमारे पास galaxies बनती हैं। दिस बैंड इज़ अ मिल्की वे गैलेक्सी। जो ये बैंड होता है हम इसको मिल्की वे गैलेक्सी भी बोल सकते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो खुद में इसका पार्ट है। हैंस इन एंशियंट इंडिया, देखिए जब एंशियंट इंडिया था तो उस टाइम क्या होता था, जब उस तरह की वो वाइट बैंड दिखता था लोगों को तो उनको लगता था कि स्काई में कोई नदी प्रवाहित हो रही है। जब वो ऐसा सोचते थे तो उन्होंने उसको नाम दिया आकाश गंगा, बिकॉज गंगा वॉज द रिवर एट दैट टाइम, दैट वॉज प्रोमिनेंट रिवर एट दैट टाइम। तो उसी को देखते हुए लोगों ने नाम दिया आकाश गंगा। Hence in Hindi we can say Milky Way galaxy is named as Akash Ganga, and English we call it as Milky Way galaxy. Galaxy is a huge collection of gas, dust and billions of stars and their solar system. A galaxy is held together by gravity. Our galaxy, the Milky Way, also have a supermassive hole in the middle, जिसको हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्लैक होल, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक होल, सुपर मैसिव होल है जिसमें जो चीज़ जाती है वो कभी वापस नहीं आई। सो वी कॉल इट एज ब्लैक होल। नाउ
A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. But one thing is for sure and for certain, that whatever the size is there, whatever things are there, we all, you, me, and we all belong to this universe. We all are part of this galaxy. Now let us take a quick recap what we did today. We discussed about full moon, then we discussed about new moon, then further we discussed about constellations, pole stars, planets, solar system, then we discussed about planets, then we discussed about our earth, then asteroids and meteoroids. And here I am giving you 2 to 3 points, important points from this chapter. That is, first one is a group of stars forming various patterns is called constellation. A huge system of stars is called galaxy. Venus is the closest celestial body to our earth. Earth is the third nearest planet to the sun. Planets do not have their own light and heat. Moving further, if we discuss about the planet known as the Earth twin is Venus, which is the third nearest planet to the sun. Oh, but obvious Earth, I told it. Now all the planets move around the sun in an elongated path. The pole star indicates the direction of the north, and asteroids are found between the orbits of Mars and Jupiter. This is all from my side. If you still have any doubt, let me know in the comment section, and hit the like button, hit the subscribe button, and just share my video with your friends, relatives and all. Thank you and have a nice day.